नमस्कार एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है इस हाई एनर्जी मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। चाहे प्रिपरेशन क्लास 11 या 12 की हो, बीपीएससी TRE 4.0 की या फिर PGT फिजिक्स की, आज का ये सेशन एक रियल गेम चेंजर होने वाला है। आज हम थर्मोडायनामिक्स ऑफ सर्फेसिस को बिल्कुल कोर से डिकोड करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में वो क्रूशियल मार्क्स इजीली सिक्योर किए जा सकें। तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए। सेशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्लासिक एग्जाम ट्रैप से जिसने अच्छे टॉप रैंकर्स को कंफ्यूज किया है। दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी लिटरली एक ही चीज है या इनके बीच कोई बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज की मास्टर क्लास का सिलेबस स्क्रीन पर है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। एडवांस्ड रिलेशंस, कर्व्ड सर्फेसेस का प्रेशर, कैपिलैरिटी और आखिर में एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन राउंड तक। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। पहला सेक्शन, सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट्स। यहाँ हम उस प्रॉपर्टी को समझेंगे जो एक लिक्विड सरफेस को स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करवाती है। असल में सरफेस टेंशन एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इमेजिन कीजिए एक शांत लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ की गई एक इमेजिनरी लाइन। ये फोर्स उस लाइन के दोनों तरफ एक्ट करता है। खासियत ये है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल और उस इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यही वो हिडन मैकेनिकल फोर्स है जो इन लिक्विड्स को आकर्षक प्रॉपर्टीज देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टेंशन एंड एनर्जी रिलेशन। यहाँ हम एक सॉलिड कनेक्शन बनाएंगे मैकेनिकल फोर्स और थर्मोडायनामिक एनर्जी के बीच। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक है। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम जिसे एक सोप सॉल्यूशन से निकाला गया है। अगर उस फ्रेम के एक वायर को हम डेल्टा x डिस्टेंस तक नीचे खींचे तो हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? असल में यही वर्क डन उस लिक्विड फिल्म के अंदर सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इस डेरिवेशन के स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमें वर्क मिलता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सोप फिल्म के 2 साइड्स होते हैं, इसीलिए लेंथ और एरिया इंक्रीज डबल हो जाते हैं। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? यही कि न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन स्ट्रिक्टली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन एग्जाम में मार्क्स दिलवाता है। सेक्शन 3, प्रेशर इन कर्व्ड सर्फेसेस। अब देखते हैं कि जब लिक्विड फ्लैट नहीं होता यानी कर्व्ड होता है, तब यही सरफेस एनर्जी अंदर क्या हलचल मचाती है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। जब भी लिक्विड की सरफेस कॉन्केव होती है तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है वो अंदर की तरफ यानी इनवर्ड पॉइंट करता है। इसका सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि कॉन्केव साइड पर प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के मुकाबले हमेशा ज्यादा होगा। बस इसी लॉजिक से एक्सेस प्रेशर का जन्म होता है। ये टेबल लिटरली एक चीट शीट है। लिक्विड ड्रॉप्स के लिए 2T/R, सोप बबल्स के लिए 4T/R और सिलिंड्रिकल शेप्स के लिए T/R। इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। गारंटीड सवाल आते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कैपिलैरिटी और कॉन्टैक्ट एंगल। जब लिक्विड्स ग्लास जैसी सॉलिड सर्फेसेस से टकराते हैं तब असली जादू शुरू होता है। वाटर और मर्क्यूरी का ये कंपैरिजन एकदम क्लासिक है। वाटर को देखिए, ये ग्लास वॉल से चिपक जाता है और ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ राइज करता है। वहीं दूसरी तरफ मर्क्यूरी बिल्कुल अलग बिहेव करता है। ये ट्यूब के अंदर डिप्रेस हो जाता है यानी नीचे दब जाता है। लेकिन इस उलझे बिहेवियर का ठीक रीजन क्या है? सारा खेल फोर्सेस और कॉन्टैक्ट एंगल का है। वाटर और ग्लास के केस में एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बनता है, जिस वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस हावी हो जाती हैं, एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है और कैपिलरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल क्लियर लॉजिक? लीजिए, अब वक्त आ गया है हमारे फेवरेट सेक्शन 5, रैपिड फायर रिवीजन का। जो पढ़ा है उसे मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक करने का बेस्ट तरीका है एक्टिव रिकॉल। तो गियर अप कर लीजिए। सवाल नंबर 1, दिमाग दौड़ाइए। सरफेस टेंशन की SI यूनिट और डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है? हिंट, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ से डिराइव होता है। बिल्कुल ठीक,
यूनिट है न्यूटन पर मीटर। और क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से लेंथ की डायमेंशंस आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बचता है m1l0t-2। दूसरा सवाल, और ये एक बड़ा एग्जामिनर ट्रैप है। एक स्टैंडर्ड लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है, तो सोप बबल में ये प्रेशर डबल होकर 4T/R क्यों हो जाता है? क्योंकि सोप बबल के पास एक नहीं बल्कि दो फ्री सरफेसेस होती हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, जो दोनों हवा के कांटेक्ट में होती हैं। इस ड्यूअल लेयर की वजह से सरफेस टेंशन फोर्स सीधा दोगुना हो जाता है। तीसरा सवाल, और ये थोड़ा एडवांस्ड थर्मोडायनामिक्स से है। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल पॉइंट के पास पहुंचता है, तब सरफेस टेंशन पर इसका क्या असर पड़ता है? रूल सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन हमेशा घटती है, और जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी को हिट करता है, थर्मल एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग टूट जाते हैं और सरफेस टेंशन एग्जैक्टली 0 पर ड्रॉप हो जाता है। चौथा और आखिरी रिवीजन क्वेश्चन, ऐसा कौन सा लॉ है जो एक फ्री फॉलिंग लिक्विड ड्रॉपलेट को ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट स्फीयर बनने पर मजबूर कर देता है? इसका आंसर सरफेस एनर्जी में ही छुपा है। किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। कम एरिया मतलब कम सरफेस फ्री एनर्जी। ये थर्मोडायनामिक्स का तरीका है सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देने का। सेक्शन 6 एग्जाम मोटिवेशन। आज हमने काफी डीप और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्मूथली कवर किया है, जिसके लिए आप सभी एस्पिरेंट्स बधाई के पात्र हैं। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स सिर्फ रैंडम इक्वेशंस रटने का नाम नहीं है। ये नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस को फील करने और समझने के बारे में है। एक बार कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ गए तो कोई भी टफ क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में एफर्टलेस लगने लगता है। अपनी मेहनत पर और इन कोर फंडामेंटल्स पर पूरा भरोसा रखिए। Look at how water behaves. On a leaf, it beads into a perfect sphere, but on clean glass, it collapses, spreading completely flat. Welcome to SR Academy 2.0. Today, we are dismantling the physics of surfaces, a high-weightage topic across BPSC, PGT, and Class 11 and 12 physics exams. We typically measure surface behavior in one of two ways. On the left, we have surface tension, defined as the force per unit length that minimizes a liquid's area, measured in newtons per meter. On the right, we have surface energy, defined as the mechanical work required to create a new unit of area, measured in joules per square meter. These seem like different measurements. One is a force, the other is an energy. But they are mathematically identical expressions of the exact same physical phenomenon. To see why, we must look at the intermolecular forces at play. Cohesive forces pulling identical molecules together, and adhesive forces interacting between different molecules. Inside a beaker of liquid, a molecule in the bulk is completely surrounded. Cohesive forces pull on it symmetrically from every direction, resulting in a net force of 0. It sits in perfect equilibrium. But at the surface, a molecule is missing its upward neighbors. It is only pulled sideways and downwards. This creates a net inward pull toward the bulk of the liquid. That inward pull is surface tension. Because these surface molecules are being actively pulled inward, remaining at the surface requires work. They possess excess potential energy. Physical systems naturally seek their lowest energy state, so the liquid automatically minimizes its surface area to reduce that excess energy. We can prove this equivalence directly using a standard rectangular wire frame dipped in a soap solution. The soap film forms on the frame, and surface tension immediately acts to shrink it, pulling the sliding wire AB inward with a force equal to the surface tension, T, multiplied by twice the length of the wire. To keep the wire in equilibrium, we have to apply an equal and opposite outward force. If we pull the wire a small distance, delta x, the mechanical work we do against the surface tension is force times displacement. Crucially, a soap film has two free surfaces, a front and a back. So the total new surface area we've created is twice the length of the wire times the displacement. When we calculate the work done per unit of new area, we divide our work equation by our area equation. The length and displacement terms cancel out completely. We are left with work over area equals T. The tension force and the surface energy are exactly the same value. Creating new surface area directly translates to the tension holding that surface together.
This molecular tension forces macroscopic changes in the liquid's shape. This diagram shows the resultant forces on a molecule based on surface curvature. On a plane surface, the horizontal tension forces cancel out, leaving zero net force. On a convex surface, the tension angles downward, creating an outward resultant force. But on a concave surface, the resultant force points strictly inward. To maintain equilibrium against that inward pull, the pressure on the concave side of any curved liquid surface must always be greater than the pressure on the convex side. This pressure difference is what defines the curvature of every meniscus and liquid interface we observe. Let's calculate that pressure difference for a spherical liquid drop. We will slice it in half to analyze the forces acting on the upper hemisphere. The internal pressure pushes upward against the inner wall of the hemisphere, while the external atmospheric pressure pushes downward. Both pressures act across the flat circular face area of pi r squared. Surface tension acts along the outer boundary. It pulls the upper hemisphere downward along the entire circumference, adding a downward force equal to T times 2 pi r. For the drop to remain stable, the upward forces must perfectly balance the downward forces. To find the excess pressure, we shift the external pressure to the left, factor out the area, and divide. The excess pressure inside a single surface drop simplifies to 2T over R. If this were a hollow soap bubble instead of a solid drop, the film would have both an inner and an outer surface. The surface tension force doubles, changing our excess pressure formula to 4T over R. The fundamental distinction between these two systems is the number of interfaces. A liquid drop has 1, a soap bubble has 2. This distinction shifts the resulting pressure by exactly a factor of 2. That tension dictates pressure, but how does the liquid interact with solid materials? We measure this interaction using the angle of contact. This graphic shows a glass plate inserted into two different liquids. The angle of contact is the angle measured inside the liquid, formed between the solid surface and the tangent to the liquid meniscus. Notice the acute angle for water on the left and the obtuse angle for mercury on the right. This angle is determined by a competition. If the adhesive forces between the liquid and the solid are stronger than the liquid's internal cohesive forces, the liquid is pulled toward the solid. A solid with high surface energy will pull a liquid flat across its surface, creating a low, acute contact angle and excellent wettability. Wettability is simply a liquid sacrificing its own spherical shape to minimize the high surface energy of the solid it touches. Continuing with our diagrams, look at the narrow capillary tubes. That same acute contact angle causes water to pull itself up the tube. Mercury's obtuse angle causes a capillary depression, pushing the liquid level down. Let's lock this in with a rapid-fire revision quiz. Question 1. What is the dimensional formula for surface tension? mL0T-2. Question 2. What is the formula for the excess pressure inside a soap bubble? 4T over R. Question 3. If a liquid perfectly wets a solid surface, what is the contact angle? 0 or highly acute? Question 4. In the drop weight method, what specific force balances the weight of the falling liquid? The surface tension force, equal to 2 pi RT. Question 5. As a particle shrinks to the nanoscale, does the surface energy of the material increase or decrease? It decreases, a result of surface atoms having fewer neighbors to interact with than atoms in the bulk. Mastering these specific answers provides a measurable competitive edge in any PGT or board-level physics exam. Here is your homework. Pause the video and solve these two practice numericals, one on excess pressure and one on capillary rise. Post your answers in the comments below. True mastery comes from putting pencil to paper. Consistent practice and precise conceptual clarity are how you crack these exams. If this breakdown helped you, like the video, share it with your study groups, and subscribe to SR Academy 2.0 for more high-yield physics masterclasses. Keep calculating, and I'll see you in the next one.